Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to another Career 24/7 video here on Asim Munir? Manure? Asim Manure? Manure. Manure? It can't be manure, right? Munir. Manure. It doesn't matter. Manure, whatever. Gives himself promotion after loss against India. So Asim Manure, I believe he was the lead. He was like the head army guy, right, of Pakistan, and apparently, he went ahead and gave himself a promotion, a very rare promotion as well, which I believe only happened like one or two other times in Pakistani history. Okay. Okay. Asim Manure gives himself promotion after loss against India. In the video, we discussed the surprising move by Pakistani's army chief, Asim Munir, who reportedly gave himself a promotion following a major setback against India. Understanding the political and military implications of the bold decision. Okay, let's learn a little bit more. Link to this video will be in the description down below, so make sure to go check it out. And without further ado, let's get right into the video. I was gonna say get right into you, but that doesn't make any sense. But I guess I'm actually talking to the video. Okay, we're getting into the video, guys. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 मैं हूं प्रशांत Hello, भगत। नाउ welcome, यहाँ पे welcome. आप देख रहे हैं उस आदमी को जो प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना Look at this. Oh my God, look at this Photoshop here. Dude, look at this. Look at all those medals. Wow. Veteran, war veteran, hero. का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है आसिम मुनीर ने खुद को Munir- बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया है। Munir? अब ये Munir? पाकिस्तान में बन चुका है एक फील्ड मार्शल। आपको समझना होगा ये कितनी Field बड़ी बात है। Marshal. That's what it is. Yeah, promoted to Field Marshal. Field Marshal, which I don't know, man. Get like Field Marshal over what? What did they do? This something's off. Something feels fishy about this. कि इस आदमी के अंडर इसके कंट्री के 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। Pakistan's कई 11 air bases, 9 terror camps. What did India achieve with Operation Sindoor? Yeah, okay, so let's take it back. Let's take a step back for a second, all right? The whole thing started from, India being targeted by these terrorist encampments in Pakistan, right? These terrorist organizations. They came over, they targeted and they killed Indian civilians. So what did India do? India targeted these terror camps. They went out and destroyed these terror camps. What did Pakistan do in reference to that? In response to that? Pakistan started artillery firing and sending missiles and drones at India. So what did India do? India targeted the air bases and stopped them from sending out their missiles and their drones and everything like that. It's like, why is Pakistan defending these terror camps? It's crazy. It's crazy. And yeah. आतंकवादी मारे गए जो वेल Crazy. डॉक्यूमेंटेड है। Many सैटेलाइट terrorists killed, yeah. It was several hundred, right? At least it was more than 100. I know that for sure. रियल टाइम वीडियोस हर जगह हमको दिखता है कि पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, मगर तब भी इतना ज्यादा लॉस करवाने के बाद भी पाकिस्तान Major loss. Manure's magic. Manure's magic. Lose at war, get a promotion. The promotion of Pakistani Army Chief Asim Munir to Field Marshal has been packaged as a reward for his so-called military success against India. However, it is a more desperate attempt to mask the failure of his operation, whatever that is. Munir's elevation cements his control, not credibility. Cements his control. What is he trying? Was he aiming for a coup? I mean, that's what it kind of feels like, right? Like he's like pushing for this promotion for himself. I don't know. It kind of feels like he's like aiming for a coup, doesn't it? Kinda, sorta. का इस आदमी ने अपने आप को पाकिस्तान का Several damaged 11. IAF severely damaged 11 Pak bases in May 8th to 10th military strikes. अल्टीमेट आप कह लीजिए ऑनर दे दिया है एक फील्ड मार्शल का। देखिए एक फील्ड मार्शल आपको समझना होगा। Okay, so yeah, since gaining independence in 1947, Pakistan has awarded the 5-star rank of Field Marshal only twice. First to General Muhammad Ayub Khan. The second instance occurred in May 2025 when Asim... No, so he's the second one.
like ever. He's the second one ever. Also, wait a minute. Didn't this guy also pull off a coup? Muhammad Ayub Khan? Didn't he also pull off a coup? होगा 5 स्टार हाईएस्ट रैंकिंग जनरल होता है। ये फील्ड मार्शल की पोस्ट आपको भारत में भी मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल बनाया है। एक तो इनका आर्मी जनरल था मोहम्मद अयूब खान, जिसने बाद में देश में कर दिया तख्ता पलट, ये बन गया प्रेसिडेंट डिक्टेटर। ये He became a yeah. I mean, he था just said it. मोहम्मद अयूब खान, Yeah. जिसने बाद में देश में कर दिया Who तख्ता later पलट। carried out a coup in ये the बन गया country and he प्रेसिडेंट became the डिक्टेटर। president dictator. Is Asim Munir going to be doing the same thing? Is that his goal? Is he leading by, or is he following by example here? Oh my God. ये जरा आप देख पाओगे, ये था मोहम्मद अयूब खान। इसी के अंडर पाकिस्तान ने 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हारी थी, और इसके मरने के बाद पाकिस्तान ने किसी भी आर्मी जनरल को फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं दिया, क्योंकि लगातार इन्होंने एक के बाद एक वॉर हारी है। उसके बाद चाहे 1971 वॉर हो, कारगिल वॉर हो, True. मुशर्रफ I ने mean, not according to Pakistan, though. According to Pakistan, Pakistan won those wars. खुद को कभी भी फील्ड मार्शल नहीं बनाया। मगर आसिम मुनीर ने अचानक से खुद को डिक्लेयर Pakistan has elevated Army Chief General Asim Munir, the rank of Field Marshal Prime Minister Shehbaz Sharif. Office said on Tuesday, making him only the second general in country's history to raise to that कर rank. दिया है कि अब यह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, द सेकंड फील्ड मार्शल। What did he do? He didn't do anything. This seems so unwarranted. This definitely feels like a ploy. This definitely feels like he's pushing for इन something. पाकिस्तान हिस्ट्री कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, भारत में जब हम एक व्यक्ति को फील्ड मार्शल का टाइटल देते हैं, द 5 स्टार जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, उसके पीछे रीजन और लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में भी अब तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल आ चुके हैं। पहले तो थे सैम मानेकशॉ, द लेजेंड, जिन्होंने था मेन रोल प्ले किया था पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करने में। अगर भारत की हिस्ट्री में कोई जेन्युइनली डिजर्व करता है ये टाइटल, तो ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ ही है। फिर बाद में 1986 में हमने भारत के पहले जो मिलिट्री कमांडर थे करियप्पा साहब, इनको भी ऑनररी फील्ड मार्शल बनाया, क्योंकि इन्हीं के अंडर भारत ने 1947 में कश्मीर का जो हिस्सा जो आज भी हमारे पास है वो हमने बचा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सडनली 1947 में कश्मीर I'll need to learn a little bit more about those guys. I feel like I should learn the history a little bit more. जब पे अटैक किया गया था, तो इनका भी क्रिटिकल रोल है इन इंडियन हिस्ट्री। जो आज के समय हम बात कर पाते हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी में हम पानी कट कर देंगे, कुछ कर देंगे, डैम बना देंगे, उसके पीछे भी आप अगर देखो तो फील्ड मार्शल करियप्पा साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो हमारे यहाँ तो देखिए, जब कोई आर्मी जनरल फील्ड मार्शल बनता है, 5 स्टार जनरल का हम उनको सम्मान देते हैं, उसके पीछे रीजन, लॉजिक, हिस्ट्री होती है। मगर आसिम मुनीर को क्यों यहाँ पे बना दिया गया फील्ड मार्शल, नो वन अंडरस्टैंड्स। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान के एयर No way. Pakistan Army Chief Asim Munir hid in bunker as India attacked. Is that why their air defense failed? Because their army chief was hiding in the bunker? बेसिस की बॉम्बिंग कर रहा था, जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड फैक्ट है। वो सैटेलाइट इमेजेस, चाहे यूएस मीडिया इंडिया की Yeah, exactly. That's one thing that India did, is they actually went out there and posted like actual verifiable physical proof that wasn't AI generated, mind you, like what Pakistan did. India went out and actually posted proof. अगेंस्ट जितना भी हो, मैं अगेन मुझको एक बार And yeah, U.S. media again. I don't know why. Listen. I honestly I could not tell you why, but the weird legacy media push to follow this propaganda was absolutely insane. I even had to like talk to my friends and family about the actual factual truth. It's crazy. बात बोलनी पड़ेगी। And it just feels like मीडिया that's ने the way ये बात कवर नहीं it करी is. कि आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गया था, जब हमने नूर खान बेस को भी अटैक कर दिया। मगर एक बात नोट करना, जो बायस्ड अमेरिकन मीडिया है ना, वो बार-बार एक बात रिपीट करता जाएगा। And it's not even just like, well, the problem is a lot of this media is paid off for by a lot of other corporations, right? And these corporations have agendas that they want pushed, and it's not even just necessarily like a left leaning or right leaning. It's all of them. It's all the legacy media. All legacy media is tarnished and biased and agendaized, as if that even is a word. But yeah, like, we should look for other avenues
other media sources rather than these legacy media sources. And one thing that we should always do as well is fact check. We should always fact check. We should always verify. We should always try to interpret things if they're misinformation, disinformation, factual, true. We should always double check those things as well. And then we go to these more independent journalists here, like this channel. Right, like this channel is great. This channel seems fantastic. They do a lot of actual like investigation. They do a lot of fact checking, double checking, stuff like that. And this is the type of thing that most people need to do. I feel. आएगा कि इंडिया के जी बहुत सारे फाइटर जेट गिर गए और अब भारत को क्या करना चाहिए। भारत को F-35 फाइटर जेट परचेज करना चाहिए। जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो क्लेम है कि इन्होंने कुछ जी इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, इसको लेकर बाकी कंट्रीज ऑफिशियली क्या कह रही है। India just dropped all tariffs on the United States. Now again, who's this guy? I don't know who this guy is. I think this is the Fox News logo. I don't watch Fox News. I don't watch CNN. I don't watch any of these legacy media. I prefer to get my news sources from places like X, from more independent journalists that you can find on X and on like their own personal vlogs and YouTube of course as well. And my own investigation as well. Like I go in and I try to get as much actual factual proof. And there's a lot of things that you can kind of like discern as misinformation and disinformation just by looking at it. And it's so weird. Like the U.S. media, yeah, like he's showing here, they just ran with the propaganda that was pushed out by Pakistan, right? Weird. Very ऐसा कुछ weird. नहीं हुआ है। Very हमने weird. अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स पर सारे टैरिफ ड्रॉप नहीं किए हैं, ठीक है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल देते हैं अमेरिकन मीडिया को, अमेरिकन मीडिया ये बात बता देती है अपने लोगों को कि जी टैरिफ ड्रॉप कर दिया। अब आगे की बात सुनना। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. They're buying French planes. I don't know who this person is, but they're buying French planes. Okay, listen. All right, I'm American, right? I am a U.S. citizen, and I love my country, right? I think our weapons are great, but you know what? The whole world doesn't need to buy our weapons. Why are we the arms dealer for the entire world? That doesn't make sense to me. Why aren't we keeping our own weapons? Why don't we keep our weapons and let these other countries build or make their own weapons or whatever, right? Like what? Why are we facilitating these weapons of mass destruction? Not weapons of mass destruction. That's going a little overboard. Well, I mean, they are mass destruction, but I guess when you refer to weapons of mass destruction, you're talking like nuclear, right? But why are we facilitating these arms deals to all of these different countries? It seems, I don't know. We use our taxpayer money to build these weapons, and then we sell them to get more money back for the government, and it's just like, it's weird. यहाँ पे आपने सुना ना पाकिस्तानी क्या करते हैं, ये जो न्यूज़ क्लिपिंग है इसका बस ये वाला पार्ट दिखाते हैं। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. F-35 वाला पार्ट छुपा देते हैं क्योंकि अमेरिकन मीडिया की सारी कहानी यही है। लेफ्ट विंग मीडिया हो, राइट विंग मीडिया हो, फॉक्स हो, CNN हो, इनके यहाँ पूरे देश की पॉलिसी है। भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मिलिट्री कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें अगर भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है, भारत ने हैवी डैमेज किया है, ये चुप होकर बैठ जाएंगे। एक शब्द नहीं बोला जाएगा, कुछ ऐसा नहीं बोला जाएगा कि क्या ऑपरेशन किया है, इतनी सारी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दी, रात में दिन हो गया, नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि इनको पता है अगर तारीफ कर दी भारत की तो इनडायरेक्टली जो रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी तारीफ हो जाएगी, क्योंकि घूम फिर के हम यूज क्या कर रहे थे यार। I don't know if that's necessarily true, but it does. I don't think we weren't, I don't think these media sources were not running with the actual truth because they were defending Russia or they were defending against Russia. I just think that it just didn't, like the actual truth just didn't reach them. Like this fake propaganda news was pushed out by Pakistan, which was further pushed out by China. And it reached further and faster than the actual factual truth of that from India, right? That's I think that's what's actually truthful. And then another thing that's wrong with these legacy media outlets is they never come out and like retract previous statements, only if there was enough pushback, but they very, very rarely retract any previous statements that are even proven false. And that's one good thing that's good about X is
they have the community notes on there. So if something is false, something is wrong, the community notes will pop up and then alert anybody that even looked at that like liked it or something or interacted with it, saying, hey, guess what? This was proven wrong. They don't do that with Fox News or CNN or any of these legacy medias because they don't care. यहाँ पर ब्रह्मोस S-400 Isn't this about Asim Munir? रशियन मेड बहुत सारे जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो यूज किया। ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन मेड आकाश भी था और फ्रेंच मेड रफाल भी था, मगर अमेरिकन मीडिया इतना पेट्रियोटिक है, इनको ये पता है जब अमेरिकन वेपनरी की जय जयकार होगी तभी हमको मेंशन करना है। कुछ मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर भारत बहुत सारे F-35 परचेज कर लेता है ना, उसके बाद आप देखना अमेरिकन मीडिया इंडियन एयरफोर्स की खूब तारीफ करेगा। क्यों? अब हमारा सामान यूज कर रहे हैं ना, ये इट इज ऑल बिजनेस। और इंटरनेशनली भी आप देखोगे चाइनीज मीडिया, चाइना के जो राइटर्स हैं, Chinese media, जर्नलिस्ट हैं, प्रो चाइना राइटर जर्नलिस्ट जो बहुत सारे हैं आज के समय, इवन पाकिस्तानी राइटर्स ये बात बार बार फैला रहे हैं कि चाइना की जो वेपनरी है ये तो कमाल है, चाइना की वेपनरी ने कमाल कर दिया, जबकि China's weaponry failed. The one thing that India proved out of all this is the absolute failure of the Chinese the protective systems, their SAM systems, their aerial defense systems, and the absolute failure of their jets. That's the one thing that India proved was these Chinese weapons aren't very good. And then Indonesia was set to buy some French planes as well, but now what they're having second thoughts because of the propaganda. Crazy. कि आप अगर मिलिट्री जनरल, मिलिट्री जो ऑफिसर्स है बाकी कंट्री से उससे पूछे, वो कह रहे हैं कुछ वेरीफाइड क्लेम्स नहीं है। पाकिस्तान का जो क्लेम है कि जी रफाल गिरा दिए, ये सुखोई गिर दिए वगैरह, पहली बात कोई सबूत नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेज भी नहीं है। नो वन नोस के यहाँ पर पाकिस्तान ने किया क्या है। बट रिसेंटली चाइना का मीडिया दबाव डाल रहा था इंडोनेशिया पर, न्यूज फैला रहा था कि इंडोनेशिया भी फ्रेंच मेड रफाल परचेज करने वाला है। इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडोनेशिया थोड़ा सा सोच रहा है कि ये डील इनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाउ इंडोनेशिया की तरफ से इनके जो डिफेंस के एक ऑफिशियल इन्होंने साफ साफ बोला कि ये जो सारी बातें बोली जा रही है ना कि रफाल गिर दिया है, ये अनवेरिफाइड क्लेम्स है। अनवेरिफाइड क्लेम्स इन कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सोल बेसिस फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस और फेलियर ऑफ ए पर्टिकुलर वेपन सिस्टम। And that's the thing. It was all unverified claims. It's crazy. मैं आपको ऑफिशियल स्टांस बता रहा हूं बाकी कंट्रीज की मिलिट्री का। तो देखिए चाइनीज और पाकिस्तानी राइटर जितने मर्जी आर्टिकल वगैरह छाप दे के चाइना If there is an insult, it is this. Deputy Prime Minister Ishaq Dar arrived in Beijing for 3 days. There was not even normal carpet on the floor to welcome him. No ministers, only Chinese government officials were present at the airport to receive him, and he was made to travel in a minibus. So the Pakistani Deputy Prime Minister went to Beijing, went to China, and no head honcho or anything greeted him, and they just kind of gave him like a almost like a cold welcome. I mean, yeah. की मिलिट्री ने कमाल कर दिया। Again, like I said, dude, the one thing India proved was that these Chinese weapons aren't good. बट भारत का जो बड़ा क्लेम है, हमने ये बात प्रूव भी करी है कि चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, एक हमने किया जैम, एक हमने कर दिया डिस्ट्रॉय। ये बात पूरी दुनिया को पता लग चुकी है। चाइना की सरकार आप अगर देखो ना, पाकिस्तान से काफी गुस्सा है, क्योंकि उनको पता है आज के समय बस लीपापोती की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और जो चाइनीज वेपनरी है ये दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। आर्टिकल्स के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए ये बात छुपाई जा रही है। बट एक बात नोट करना, रिसेंटली पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम जिसने फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट में लोगों को दिखा दिया था, ये चाइना गया। चाइना that fake news article, and then everyone was applauding it. Oh my God. में जब ये पहुंचा, नो रेड कारपेट वेलकम, कोई चाइना का बड़ा ऑफिशियल मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए नहीं आया। लो लेवल ऑफिशियल्स भेजे गए पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए चाइना में। ये देख पाओगे ये वीडियो आप, ये जो रूखा सूखा वेलकम आप देख रहे हो, नॉट इवन रेड कारपेट, एक ड्राई सा वेलकम। अगर सच में पाकिस्तान ने वो सब किया होता जो ये क्लेम कर रहे हैं, भव्य वेलकम मिलता डेप्यूटी पाकिस्तान पीएम को इन चाइना। तो ये यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि एक बार को प्रोपेगेंडा क्या है, रियलिटी क्या है। बट आसिम मुनीर ने ये जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है इसकी आड़ में ना अब एक रास्ता खुद के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है कि ये बन सकता है पाकिस्तान का अगला डिक्टेटर। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में ही He's going to become the next dictator of Pakistan. Even he agrees. Even PD here agrees, right? बताया था। आसिम मुनीर का अल्टीमेट एम यही है कि ये कंप्लीटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी हर जगह टेक ओवर करके पूरे पाकिस्तान को खुद रन करे। और जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में, चांसेस यही है। that's what it feels like. It definitely it feels like he's
pivoting towards this. आसिम मुनीर ना पाकिस्तान की जनता को ब्रेन वॉश कर देगा, प्रोपेगेंडा से हर जगह होर्डिंग लगा देगा अपनी कि इसने पाकिस्तान को बचाया है इंडिया से और ये कोई महान जनरल है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आयूब खान के बाद यही सबसे पावरफुल आर्मी जनरल है। ये क्लियरली इसके बाद He's following in the footsteps. He's following the footsteps of the General Muhammad Ayub में Khan. या तो तख्ता पलट कर देगा या फिर चुपचाप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कह देगा कि आप लोग देश छोड़ के चले जाओ, नाउ आई विल हैंडल एवरीथिंग। ये चीज धीरे धीरे सामने आती जा रही है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, आसिम मुनीर के ग्रैंड प्लान्स क्या है ये देखने होंगे। बट एक बात तो तय है कि एक आदमी जो कहीं से भी डिजर्व नहीं करता ये टाइटल, जो पाकिस्तानी खुद एग्री करेंगे, इसने टाइटल खुद को देखकर पाकिस्तानी मिलिट्री की जो बच्ची कुची थोड़ी बहुत जो आप कह लो इज्जत थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब। Oh man, dude. Crazy. Very crazy. Very wild, very crazy. Link to this video will be in the description down below. Make sure to go check it out. The remainder of this video is him promoting his course, right? PD10. PD10. Go and check it out. I like this channel. This channel is a lot of fun. It's very informative, and it feels like he does a lot of research as well. So there we go. Writers from Pakistan and American media writes very positive about their country and spit venom against India, but Indian writers like Rana Ayab and others write negative about India. That's the major difference. Testing missile sites. USA, Nevada, Russia, Ukraine. Okay, that's oof. India, Pakistan Air Base. Okay. All right. Okay. All right. Have a good one, guys. Take care. Goodbye.